forward. Okay, having said that, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, let's now start. Today we talk about composite transformation. We have just started by yesterday. We said general pivot point rotation, and today we talk about general fixed point scaling, then reflection with respect to the line y equals to x, and reflection with respect to the line y is equal to minus x. Let's take all the three today. Okay, where is one note? Now this is easy. We have done the work yesterday. That was the kind of thing, but now today it's gonna be easy peasy. Okay or not okay? Okay. So we have our topic today is general fixed point scaling. Okay. Let me draw this here right here. This is general fixed point scaling. So it is kind of a, no, we have yesterday the general pivot point rotation. We were rotating, okay, on some pivot. Okay, for example, there's a pivot, we want to rotate it, but we said before you rotate it, you have to get it where? Yes. Where you have to get it? Origin. Origin. Same is here. Only thing is today we don't have the rotation, we have a scaling. Rest is same. So it's going to be have three operations. So you want to scale 2D scaling, it's a 2D scaling, okay? In a 2D scaling, if you want to do fixed point 2D scaling, you actually have to get it onto the origin and scale it. What do you mean scaling? What do you mean scaling? Changing shape and size. Not shape, not shape, not shape. Size. That is sharing. If you say Size. shape, that is sharing. That is size. Changing the size, either making it bigger or making it smaller, right? Or small. Yeah. So we will do that, but at the origin. So therefore, it will have a three operations on it. Number one is we will translate. Okay, what do you do? Translate the object. We'll translate the object so that, yeah, tell me how we translate object so that the pivot point is at the origin. Here we call it fixed point, huh? But that's the pivot point. Coincides with the origin. Exactly. So that means we are done. We have got we had, say for example, this is my triangle. Okay, maybe I erase this. Say for example, in a black, I will do it. We had a triangle. This was my triangle, okay? And this is my fixed point, or you call it the pivot, or you call it a fixed point, whatever you like to call it. Because maximum times we say pivot when we have to rotate. So what is the pivot on which it rotates? Okay. But here we have a fixed point, and on this fixed point, according to that, we have to scale it. We have to make it bigger or smaller. Okay. So first thing is we do the step one, translate the object so that fixed point coincides with the origin. That means when I'm gonna do this, I'm getting this triangle, okay, so that the fixed point on with respect to which we have to scale, I'm getting it to the origin. I'm matching it with coinciding it with the origin, right? Okay. Then we should have a next point. What should be our next point? What is the second point we have? Yes. Yeah, we got to scale it. Exactly. We say scale the object. With respect to origin. Very good. Absolutely right. So that means now we want to scale it. I don't want to make it bigger or I want to make it smaller. Say for example, in this case, I just want to make it bigger. I just want to make it bigger. Okay. So maybe I'm scaling it up. I'm making it a little bigger, and or alternatively, I could make it smaller.
So either make it bigger or smaller than the original. So that's you are scaling it, but you are doing it at the origin. So number third, what should we do on the third thing? Translate. Translate where? At its initial position. Its original position. Exactly. I'm trying to write the exact words of book. So we say use inverse. Okay. Use inverse translation of step 1, inverse translation of this step. Okay, because we had to get it back exactly where it was. So use inverse translation of step 1 to return. कहाँ पे return होगा? To return the object. Original position. To return the Pivot. object to the. Pivot or fixed point. We are not saying pivot here. To the original Position. position. Get it back to the original position, wherever it was. So that means we are doing now. We are trying to get it back exactly where it is. It was here, so we'll get it back here. That means we are going to do it like this. So either we have made it bigger and got it back here, or we had made it smaller, but got it back to the original fixed point, where the fixed point was. Okay, the exactly fixed point should be where it was. Okay, and rest it is scaled up or down, right? So how much will be the, say for example, it was the xf and yf is the x of this fixed point and y of this fixed point. So how much you translate to match it onto the origin? How much you translate? Minus xf minus y. Minus xf minus yf, because अगर इसका x से for example 4 है और ये y इसका से for example 3 है, तो मुझे -4 करना है, इसको ट्रांसलेट -4 करना है ताकि x इसका वापस आए कहाँ पे, जो माइनस माइनस करके 0 पे आ जाए, ठीक है ना। इससे अगर y 3 है तो इसको -3 करना है ताकि वापस 0 पे आ जाए, ताकि x भी 0 आए y भी 0 आए, तो वो ये चीज बनेगा। तो इस पोजीशन से मैं इसको ओरिजिन पे ला सकता हूं ओनली इफ आई डू माइनस व्हाटएवर द xf वाज एंड माइनस व्हाटएवर द yf वाज, है ना। उतना x माइनस करूंगा, उतना y माइनस करूंगा, जितना इस पॉइंट का x और y था, ताकि ये पॉइंट कहां पे आ जाए 0 0, दैट इज द ओरिजिन, राइट। तो फिर उसको मैं स्केल करूंगा, जितना यूजर बताएगा कि इतना स्केल करो, स्केलिंग फैक्टर वी विल हैव डेल्टा x एंड डेल्टा f डेल्टा y। So कितना x scale करना है, कितना y scale करना है, we will do that and then we will translate it back. Okay, so this point will translate back, कितना करूंगा, xf and yf, जितना था, जितना पहले था 4, say for example it was 4 3, so 4 3 I will do it in the both cases, right, right. But we said we do it using the matrices, because this is a composite transformation where we have not one transformation, we have many transformations. And right now we have translation, scaling, translation, 3 transformations, right? We first translate, then we scale it, translate first, translate where? Translate to the origin, then scale it, then translate back to the original position. है ना? It is very simple, but many of the students are as if they are dead bodies. So this is what you have done to yourself, because you are not working continuously and you are as if you are dead wood. Reason, you are not working continuously. So if you work continuously, you make copies, you will be good, better and better each and every day. Danish Yusuf, Mir, Hina, Saeed, Athar, Peer, Anjuman, Athar. I'm not going to tell you again to open up the cameras. Now this is getting very bad. Now this is indiscipline, because I'm telling you to open up the cameras and you are not opening. You're keeping it off. I care a damn about your chatting and all. You may be saving your data for later chatting and all. I don't care about that thing. In a class, if you have to give class, your camera should be on and you should show your faces, and you are learning or not, you have to responding back or not, you have to show me that thing.
मेरे साथ ये चीजें नहीं चलेंगी. सईद अथर, समझ नहीं आती है बात? So देखिए, Saeed Athar is not responding. So what is the fun of him being in the class? So he's not in a class at all. Guys, khabar kai pan. Let me remove this guy. So I'm going to remove him. Okay. So yeah, yesterday we said that either if we have a composite transformation, either we do single operation individually. Okay, we have a matrix of, say for example here, translation, then we do the translation, then we have a matrix of the scaling, we do the scaling, and after that we have a matrix of again translation, and we do the translation, and we do 3 operations to do this same stuff. Or alternatively, that's why we have the homogeneous coordinates. We can just combine all of these matrices together in a one matrix and apply it once. Do you understand? So in a one step, all the 3 operations will happen in a one step. That's why in an animation, when we have many such operations which we have to do to move an object, okay, we have to rotate. Maybe somebody is revolving as well as rotating, and as well as making some bigger, focusing and defocusing. So all the operations are coming into play. Either we will do it one by one, it will take a lot of time, or for a computer it's one and the same thing to do it in a single go. So what we do in a single go is we combine all the matrices together into the one matrix and apply it on the object, and all the operations will be done in a one go. Does it make sense? That is why we have the homogeneous coordinates, so that we all the operations like translate, like rotate and scaling, they are all 3 by 3 matrices, so that we can combine them together, we can multiply them together, combine them together, and make a one matrix and apply that. So that's what we're going to do. So basically we have 3 operations here, isn't it? So the translation jo final mera hoga, transformation, maybe because a capital T, it is the first T, translation. Okay, is it? And then we have also the scaling. We have what? Scaling, using some scaling factor. Okay, scaling factor of x and y. And then we also have a translation. Okay, and the first translation we do to get it to the origin using the minus xf and minus yf, that is, we show it here, we show it at the end. Then the scaling factor will be delta x and delta y, how much you want to scale it, and then you have to get it back to the original position using the xf and yf. Okay, whatever the x and y was originally, we'll get it back. So what is the matrix of this translation? What is the matrix of translation? Identity matrix 1 0 1 xf 0 1 0 1 yf. Then 0 0 1. this is my homogeneous matrix. Then we have this thing. Yes. Delta x 0 0 delta y. Very good. This is the matrix of what? Scaling. Scaling. Delta x 0 0, 0 delta y 0, and 0 0 1. And then again, this is the same thing as of the translation, but right now we have minus xf and minus, this is minus yf. Okay, so this will be 1 0 minus xf, then 0 1 and minus yf, and 0 0 1. And now we should apply the matrix multiplication to get it back, right? Does it make sense what I'm doing? Let me take one screenshot first. FN and print screen. Okay. Now let us multiply these two. How we multiply? First row, first column. Matrix multiply. First, what first? Shabash. First row, first column. First row, first column. Let's multiply these two guys first. First row versus first column. Then first row is the second SX. column. First row is the third column with third element. First row versus first column will give me the first element, right? Delta. So this will be here. That means 1 into delta x is delta x,
0 into 0 is 0. Del x of f into 0 is 0. So what will be there? Delta x. Delta Right? X. What will be the next element? That is first row versus First row, second row. second column. What will be there? Here is 0, here is 0. तो ये दो तो गए. हाँ, तो आंसर क्या आएगा? वो बताएगा मुझे? 0. 0 आएगा. क्योंकि तीनों में 0 है. क्योंकि ये बीच वाला 0 इसके साथ हो जाएगा, ये दो 0 उनके साथ हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं रहेगा. अच्छा, what will be third element? X of ये भी f. 0 है, ये भी 0 है, तो ये दो गए. X of f X of- into 1. Yes. X What is of that? X of X of f. X. Very good. Now second element will be this row versus first column. ये 0 है, गया काम से. ये भी 0 है, गया काम से. ये भी 0 है, गया काम से. तो क्या आएगा आंसर? 0. 0 आएगा आंसर. 0. हाँ. अब दूसरा element बताओ जल्दी से. What will be the next element? 0. Delta y. Delta Y. Delta y. Delta y. Somebody is saying delta y. Let it be delta y. What will be the next element? YF. Y of f. Y of f. Right. What will be third thing? Third row. What will be this element? 0. Absolutely. इसमें 001. 0 0 1 ही आएगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे. अब ये मैट्रिक्स इसको यहाँ पे रखेंगे. दिस इज 1 0 minus x of f, 0 1 minus y of f, then 0 0 and 1. Now multiply them together. बुक्स पे आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखाते हैं, वो कैसे किया है, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है ना? If you open the book, you can now understand. Now first row versus first column. हाँ जी. Delta X. So delta x into 1, ये दो zeros हैं, तो वो गए पानी में, तो सिंपली delta x आएगा हमारे पास. ठीक है. फिर 0 आएगा. 0. 0 रहेगा. Now this row versus last column. इसमें कोई 0 नहीं है, खाली ये वाला 0 है. Delta X. Delta X minus Minus x of f. into आएगा. ये into है ना? ये into है ना? Into. Yes sir. So मैं पहले x of f ही लिखूंगा. So x minus, ये तो आएगा माइनस यहाँ पे, क्योंकि माइनस फर्स्टली मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस. Minus Okay. x of X of f into delta of x. delta x. So that will be x of f into delta x. हाँ. अब अभी और करना है ना, 0 into this, वो तो गया पानी में. अब x of f plus into 1 is x of f. X of So f. plus x of f भी आएगा. ठीक है ना? So what about this guy? ये 0 है, तो ये 0. गया पानी में, तो ये खाली 0 है, तो 0 ही आएगा. हाँ. इसमें क्या आएगा? Delta Y. Delta y. डेल्टा y Delta आएगा. डेल्टा y बीच वाला आएगा. डेल्टा y, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये दो गए, डेल्टा y खाली रहेगा. नाउ y of f से इनको मल्टीप्लाई करेंगे. इससे Minus x of f into y of f plus y of f. जी, किसे इसके साथ करना है ना? हाँ. यहाँ मल्टीप्लाई आएगा ना ऊपर की. हाँ, क्या आएगा बताओ? Minus x of f. माइनस x of f है, y of f? Y of f. Y of f. माइनस पहले- y of f. क्या पहले? जब थर्ड एलिमेंट कैसे निकालोगे आप? इसको मल्टीप्लाई करोगे आप. ये जो रो है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप इस कॉलम के साथ. सो x of f जो था वो 0 के साथ हो गया ना. ये Yes, sir. 0 और x of f हो गया, वो खत्म हो गया. अब ये हो जाएगा, ये Delta. डेल्टा y हो जाएगा माइनस y of f से. That is minus y of f into delta y. Minus y of f into delta y. और y of f into 1 is, YF. so y of f. Y of f will be plus out to this. What will be the last? YF. 0 001. 0 0 1. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई X of करेंगे. F. तो दिस विल बी X of डेल्टा F x. common. समीना जाफर अब आ गई यहाँ से. सो डेल्टा f into 0. यहाँ पे x of f अगर आप कॉमन निकालोगे, x of f अगर आप कॉमन निकालोगे, अंदर क्या रहेगा? 1 minus delta X. एब्सोल्युटली. पहले इसको थोड़ा सा हम x of f ही रखते हैं इस तरह, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा फिर से.
किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि मैं इसको ये करूंगा, यानी कि मैं पहले x ऑफ f ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा x ऑफ f माइनस x ऑफ f डेल्टा x, सेम ही है जो था, ये है 0 डेल्टा y, इसकी जगह लिखूंगा मैं पहले y ऑफ f लिखूंगा माइनस y ऑफ f डेल्टा y और 0 0 1, ठीक है। अब इसको x ऑफ f कॉमन निकालेंगे, सो ये डेल्टा x हो गया, ये 0 हो गया, इसको x ऑफ f निकालेंगे कॉमन। जब x ऑफ f कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर क्या रहेगा सर, x ऑफ f जब मैंने कॉमन निकाला, इस x ऑफ f की जगह 1 रहेगा माइनस डेल्टा ये x ऑफ f निकला कॉमन, तो डेल्टा x रहेगा अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही 0 डेल्टा y, और यहाँ पे y ऑफ f में कॉमन निकालूंगा, so what will be inside 1 minus delta 1, और ये आपका 0 0 1. So this is our final matrix of fixed point scaling. So if you want to do fixed point scaling, you apply this matrix. You don't need to do first translation, then scaling, then translation. Don't do that. Do it once. Do this operation. Okay. See what is x of f, what is delta x, what is delta y, what is x of f, what is x of y, y of f. जो आपका ओरिजिनल पॉइंट था ना x ऑफ f y ऑफ f, वो तो पता ही होगा, और यूजर ने कहा होगा कितना आपको डेल्टा x और डेल्टा y कितना स्केल करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, वो डेल्टा x डेल्टा y बताएगा, ठीक है। और आप ये मैट्रिक्स अप्लाई करोगे to get that. Do you understand? Once. You will not do the composite transformation. Basically, you are doing composite transformation, but you are doing it once. For computer, you give it, you use this matrix. Does it make sense? Does it make sense what we are doing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we have now the next thing in it, that is our reflection with respect to, we have 10 minutes left. Reflection kahan gaya bhai? Reflection with respect to line y is equal to x, and reflection with respect to the line y is equal to negative x. So now we are doing the next topic, that is our reflection with respect to y is equal to x. So I have to do reflection with respect to y is equal to x. Then I have to do reflection with respect to y is equal to negative x. I have to do reflection with respect to y is negative. First, let us do this. Y is equal to x. With respect to line, it should be with respect to line y is equal to x. So what is the line with respect to y is what does this mean? Y is equal to x. Can anyone tell you what does this mean? Y is equal to x? At origin. No. This is, listen, I will tell you, don't worry, I will help you. This is my x, okay? Say this is x is 1, y x is 2. होगा उतना y भी increase होगा, straight line. Exactly. 5, 6, 7, and this is y. Y is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. And from this is -1, -2, -3, -4, -5, and so on. And from this side is -1, -2, -3, -4, -5. This is the x. This is the x. Okay. And this is the y. From this side it is a y, and from this line it is an x. So I am saying, give me the line, and then reflection उसके बाद करेंगे, उस line के ऊपर reflection करना है. जैसे मैं कहूँगा x, आपको axis है, इसके reflection करो, यानी अगर यहाँ पे बंदा है, उसको x के पार लगाओ, ठीक है? So जो हमने circle drawing algorithm किया था, उसमें हमने reflection किया था ना, quadrants में, और हमने octants में किया था. ये हो गया कि over the x आप reflection करें, कि यहाँ पे था, फिर आपने इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दिया, एंड सो ऑन, ठीक है? लेकिन मैं कह रहा हूं उस लाइन पे आप रिफ्लेक्ट करो जहां पे y is equal to x होगा, यानी कि जितना x होगा उतना y होगा. Let us do it. First let me erase this. यानी कि जितना x होगा उतना y होगा. What does this mean? जितना x होगा उतना ही y होगा, जो वही कह रहे हैं ना हम, y is equal to x. Y is equal to x means क्या? और जितना x उतना y. Say for example x is 1, x is y भी कितना होना चाहिए? 1. So that means this point. That means this point. अगर x 2 है, y कितना होना चाहिए? That is this point. अगर 3 है, y भी 3. That is this point. अगर 4 है, that is 4 होना चाहिए. अगर 5 है, ये 5 होना चाहिए. अगर 6 है, तो y भी 6 होना चाहिए. ये ना 6 यहाँ से, ये y 6 यहाँ से. इसी तरीके से अगर -1 है, तो y भी -1 होना चाहिए. That means this point. अगर 2 है, ये भी 2 होना चाहिए. 3 है, ये भी 3 होना चाहिए. 4 है, ये भी 4 होना चाहिए.
सो कुल मिला के जो ये लाइन बनेगी मुझे, वो ये वाली लाइन बनेगी। सो कुल मिला के जो 45 डिग्री पे जो लाइन मेरी होगी, वहीं पे x इज इक्वल टू y होगा। ये आपको बताने चाहिए थे मुझे, क्योंकि सर्कल जब हमने किया था कि ऑक्टेंट कहाँ खत्म होता है, जब हम सर्कल बना रहे थे, ठीक है, तो हमने वहां पे कहा था कि सर कि हमें ये ऑक्टेंट बनाना है। जो लूप हमने रुकाई थी, स्टॉप की थी, वो इस पॉइंट पे की थी जहां पे x इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है 45 डिग्री वाला जो लाइन है, इसी के ऊपर वो पॉइंट आएगा जहां x बराबर होगा y के। वहां हमने स्टॉप मारा था ना, ताकि बिकॉज वी अंडरस्टूड कि हमने ये ऑक्टेंट बना दिया उस सूरत में। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास लाइन इक्वेशन है, कैन एनीबडी टेल लाइन इक्वेशन? y is equal to, y is equal to mx plus c. if this line is going from the origin, if this line is going from the, ये पूरा origin में नहीं जा रहा, तो फर्ज कीजिए origin में जा रहा है। If this line is going from the origin, so what will be c? 0. 0. And we have the theta here, the slope m. M is equal to tan theta, and theta is Yes, how sir. much? 45 degree. 45 degree. 45 degree is what? Tan 45 degree is what? 1. 1. Tan 45 degree is 1. 1. So ये तो गया पानी में, ये तो 0 हो गया। Okay, m 1 है, m is 1, 1 और x is Y x, is equal to y x. is equal to x. तो simple सी बात है। So we can prove it anyways, that if our line which is going through this origin at 45 degree, this is the line where y is equal to x, where y is equal to x. So that means what we are trying to say is, if I have some line here, some object here, and I want to reflect it across this line, across, उसमें रूल वही लगेगा जो हमने रिफ्लेक्शन के रूल्स किए थे इसमें। तो मैंने कहा था आपको रूल कि भाई अगर आप क्वाड्रेंट से पार करते हो, विद इन द सेम क्वाड्रेंट ओवर द ऑक्टेंट आप पार कर रहे हो, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन रूल्स जो हमने पढ़े थे ना, सर्कल ट्रायंगल एल्गोरिथम, याद है? कुछ भूल गए? भूल गए हो क्या? इसीलिए एग्जाम्स लेना बहुत जरूरी होता है। आगे पढ़ना जाओ, आगे 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 सिलेबस कंप्लीट करो। इट डजंट मेक एनी सेंस। वी हैव टू स्टॉप उसमें एंड कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, साइन सेम रहता है, कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। क्या हो जाता है बताओ? वेरी गुड, क्या हो जाता है? XY y एक्स बन जाएगा, लेकिन वेरी गुड, वेरी साइन गुड, चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई नीड टू से। सो यानी यहाँ पे सिर्फ अगर आपको रिफ्लेक्शन करना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, अगर आपके कोई फर्ज कीजिए, ये ट्रायंगल तो मेरा सारा था, फर्ज कीजिए मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं अक्रॉस दिस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट है, कहीं पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड आई वांट टू रिफ्लेक्ट इट अक्रॉस दिस लाइन which is the line where y is equal to x, that is the line which is 45 degree moving through from the origin, right? यही वो लाइन है जहां पे y is equal to x होगा। यानी कि आप कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर इसका -4 है तो y भी -4 होगा, अगर आपका -5 है तो y भी -5, अगर कोई भी पॉइंट उठा लो, फर्ज कीजिए इसका अगर इस लाइन पे अगर ये पॉइंट है, इसका वैल्यू -7 है x, तो y भी -7 होगा, बिकॉज दिस इज अ लाइन वेयर y is equal to x। ये तो समझ आया? अब मसला है कि अगर मेरे को पॉइंट है और मैं इस पॉइंट को से फर्ज कीजिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 -4, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? Am I writing the coordinates? No, I am writing wrong, because if it is -4 -4, then this point has to be on this line, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कि दोनों x और y सेम है, it is only possible when this point lies on this line। लेकिन जब मैंने लाइन के ऊपर कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसका जितना x उतना y होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं x ज्यादा चला रहा हूं, से इसका x से फॉर एग्जांपल 5 आ गया और y 3 पे है, y -3 पे है, so it is like this, -5 and 3, and I want to reflect it। So my rule is simple, if it is xy and I want to reflect across this line, okay, then xy becomes yx, that's it, xy becomes yx। यानी कि मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, क्लटर हो गया यहाँ पे, कि मेरे पास ये एक लाइन है, ये मेरी वो ओरिजिन वाली लाइन है, ठीक है, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट का फर्ज कीजिए x2 है और y फर्ज कीजिए
6 है. So what is the coordinates of it? 2, 6. If I want to reflect it, because x is 2, y is equal to 6, then after reflection across this line, over this line which is y is equal to x, what will the coordinate become? X will become, after transformation, It's called reflection, x becomes 6, y 6. becomes 6. 2. 2. So that 2. means x becomes 6, 2, 3, 4, 5, 6, say for example here, and y becomes 2, so it comes here. So इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो परपेंडिकुलर अगर मैं डालूंगा इस लाइन से, जो वो डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी. उस फर्ज कीजिए यहाँ पर है वो पॉइंट, ठीक है. जो ये डिस्टेंस होगी वो भी यही डिस्टेंस होगी. अब मैं एग्जैक्ट ग्राफ पेपर से नहीं बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, लेकिन जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही यहाँ से भी होगी, वो सेम ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2, 6 था, यहाँ पे 6, 2 बन जाएगा. ठीक है. अब फर्ज की मेरे पास एक ट्रायंगल है, आई वांट टू रिफ्लेक्ट इट. Let us try to make it in a proper way. यहाँ पे ग्राफ पेपर होना चाहिए तब जाके प्रॉपर आएगा ना, लेकिन let us try to do it. यहाँ पे टेबल होते थे ना हमारे पास कुछ, ड्रॉ इंसर्ट टेबल. मैं टेबल करूंगा ये वाला, देखते हैं क्या हो जाएगा. हो ही नहीं रहा. इंसर्ट तबेला, इतना सारा. हाँ हो गया. फर्ज कीजिए ये मेरा मैं इसमें ये बनाऊंगा कि मेरा x एक्सिस और y एक्सिस है. फॉर एग्जांपल दिस इज माय x एक्सिस. एक और टेबल बनाएंगे, ठीक मेरे ख्याल से टेबल ऐसे वाला बनाएंगे दूसरा. ठीक है ना. इसको मूव कराना है मुझे, तो मैं होम में जाऊंगा और मूव बटन कहीं पे है, ड्रा में जाऊंगा. हाँ